feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. My life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम है लाइव स्ट्रीम। और ये हमारा एलन वेक का एपिसोड 4 द ट्रुथ। इसके इसके बाद 2 एपिसोड और रह जाएंगे इसके, वो भी खेलेंगे कल और परसों तक खत्म, फिर नेक्स्ट डिफरेंट गेम। Felt groggy,
Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else, someone I was watching on television. I couldn't think, couldn't focus. There were only empty sheets of paper here, no manuscript pages. The door was locked. I was a prisoner here. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah, I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message, loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Condition under control if you work together. ठीक है, अच्छी बात है. अबे इस घर में भी लिफ्ट है. वाह, खतरनाक. Nice. Open door. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. अच्छा लॉजिकली बता दिया इसने. इसको फिर ये पागल है, इसको जो फोन आ रहा है, फोन क्यों आ रहा है इसको? ये भी बता दे अब इसको कॉल क्यों आ रही है किसी की बंदे की और कह रहा है उसकी बीवी को. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy.
It's part of the I illness. let him talk. After all, Hartman I'm the obviously one loved trying his to own bring you voice. out of the His world words you've echoed constructed madly for inside yourself. my head. But I I can't dug my do nails it into by the palms of my myself. hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. ये कौन है? अच्छा इसका पागल खाना है. Now, here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Scary, scary, scary. Emerson. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay, sorry. Boo. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on Elbow video strike. games. Ooh, yeah. It's trash, of course, but it does मतलब involve video game some खेलता था, ये real ऐसा हो गया. creative effort, सही which है. makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. गेम खेलता था तो ऐसा हो गया ये. ये पागल हो रही है. वो सिंगर थी वो इसलिए सॉन्ग ज़्यादा सुनती थी इसलिए पागल हो You गई. might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. ठीक है. My rheumatism's killing ये me. दोनों बंदे ही हैं हमेशा. There's a storm coming. के. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the ये earth. तो बंदे इसके उसमें थे क्या And बोलते हैं. these two Fresh are the Gentlemen. Anderson brothers, Odin and Tor. They had a, how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Zane! You're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we'd forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. नहीं इसका रूम ऊपर तो शायद में भी है ना ऊपर था इसका रूम तो
यहाँ पे तो नहीं है इसका रूम। Welcome to Keller Lake Lodge. We here to give you the special help you need. However, please observe the following. Please ask friend and family to schedule visit for the insurance authority. Okay, next. ये तो बंद है। मतलब इसका मतलब ऊपर ही जाना पड़ेगा। कि यहाँ पे है इसका कुछ? No. Sorry, guys. मतलब बाहर ही जाके अपने रूम में जाना है। रिटर्न टू योर रूम। इसका रूम है बाहर। बाहर तो नहीं है, मतलब ऊपर जा सकता है इसका। ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ ना कुछ इसका। ठीक है। Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Patient Typewriter's rooms. in your room. Patient rooms. Something's wrong. I'm not myself. इधर है इसके रूम में। You can get to your room by those stairs. इमर्शन लेन। इसका रूम कौन सा था? एक नंबर पे शायद। डेंसो नहीं है इसका रूम। वेक। हाँ ये इसका रूम। The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody, calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? ठीक है। लाइक कर दो जो भी दिख रहा है मेरे फेवरेट तो लाइक एंड सब्सक्राइब। I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Here's a friendly poke from Mjolnir, wench. रैकेट कहाँ है? इन्वेस्टिगेट रैकेट। मतलब रैकेट कहाँ है? अबे ऐसे कैसे लग रही इसको? रिफंड में। It's my storm. I'm taking it. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Hammer's Way will have its say. Rise up in their name. अरे वो बोतल कहाँ लेके आने दे? ये बारकोड किस चीज़ का है? बारकोड लगा रखा है, स्कैन करके कुछ भी भेज सकते हो। Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Come out and face the music, Birch. It's time to pay the piper. फिर रैकेट गो टू हार्डमैन को भी स्टाफ है यहाँ पे। तो हार्डमैन को पता ही नहीं भैया कहाँ पे उसका ऑफिस। पेशेंट रूम ऊपर है। तो हार्डमैन ऑफिस कहाँ मिलेगा यार? मेरी इधर होगा। देखता जाके एक बार। जैकेट लेकिन ये तो लोग बाहर जा सकता है। ये बाहर जा सकता है। ये भी बंद है। उधर जाएगा फिर वो पंद्रह लोग। ये तो है हार्टमैन का ऑफिस। ये होगा ना? लिखा हुआ यहाँ पे। लिखा हुआ तो है ये होगा क्योंकि खुला तो यही है। The markings on the tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. He's so angry all the time. अबे कहाँ बैरी? ये बैरी है क्या? ये तो नहीं है बैरी। तो बैरी कौन है?
अबे बैरी कौन था? अबे बैरी वो था जो उससे कह रहा था कि मैं भी आया, है ना? वही था मेरे साथ। What, is this how you get your kick, Hartman? I knew you were weird. You got that weird guy look. If you're one of those nurses, I'll double what he's paying you. Barry? Okay? अच्छा Ow, बैरी ये about है। time. Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. Right I'm next door. obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Right next door. ये इसका ऑफिस। These were all the pages I had on me. And more. इसको अपनी बुक कंप्लीट करनी है। पेज ढूंढ। Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. अगर तुमने मुझे एक और झूठ बोला ना मैं तेरे मुंह पे गोली मार दूंगा। Really, Wake? Come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. पकड़ लिया इसको। अबे मरवा दी डॉक्टर को। पागल आदमी। यार उसने इसकी इतनी बदतमीज डॉक्टर नहीं थी। फिर भी ऐसे बूम हो रहा है ये। वाह। The dark presence would be on me in a moment. I had to find a way out. Escape the clinic. Oh, इतनी जाने क्या है ये? कुछ तो है ये है ना? अबे तू जा। बाहर भागना मर गया। वाह क्या बकवास है भाई। सब चीजें हवा में उड़ रही है मार रही है। The dark presence would be on me in a moment. I had to find a way out. अबे खुल जाना। और कितनी स्पीड में चलाऊं इसको? तो जाने का रास्ता एक बार उधर है। अबे फ्लैश लाइट नहीं है इसके भाई। नो फ्लैश लाइट। कोई फ्लैश लाइट नहीं है। अबे तेरी माँ की। I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. अबे कहाँ से निकलेगी? लाइट कहाँ से मिलेगी? ये लाइट रहेगी यहाँ पे। अबे गोली यही गोली है बस मतलब गोली ऊपर से ऊपर मिलेगी तेरे को। तेरी लाइट गोली है। हाँ वो रही बात है। लाइट मिल गई। जनरेटर चलाना अब की बार हमने। जनरेटर चलाना। चला जनरेटर को। ज़्यादा बार चलाना पड़ेगा मे बी।
ये तो खुल गया। जाने का रास्ता खुल गया, निकल यहाँ से जल्दी। निकलो 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 फ्लेयर का अबे सब कुछ हवा में उड़ रहा है, कैसे निकल जाता है। ये भी यहाँ पे बंद है, कुछ तो रास्ता होगा। फ्लेयर नाम की एक ही चीज थी मेरे पास, भी गई। नाउ व्हाट, अब मैं क्या करूं। फ्लेयर यहाँ पे है, फ्लेयर। रास्ता तो था ना। दैट वे या दैट वे देख लीजिए, बस ये बंद है। मतलब की बारी 3 रास्ता नहीं है, ये चलेगा, ये लगेगा आपकी बारी। यहाँ पे पड़ा हुआ अबे निकल 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 निकल, बड़ी मुश्किल से निकला। ये भी बंद है, ये भी बंद है। अबे क्या बकवास है, जब कुछ मिलेगा तभी तो खोल पाऊंगा इसको। बस खाली पिस्टल और नथिंग, और कुछ भी नहीं है। खोल जल्दी खोल इसको। कुछ मिलेगा मेरे को, कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी दो भाई, कुछ भी नहीं आता। अबे कैसे बचो इससे। भाई कैसे बचो इससे मैं। कुछ है यहाँ पे, कुछ भी नहीं यहाँ पे तो। ये खुलेगा, ये भी नहीं खुलेगा। अबे कुछ तो होगा भाई यहाँ पे, ऐसे कैसे बचूंगा इससे मैं, रास्ता ही नहीं है। बचने का कुछ तो होगा ही यार, मतलब इससे बचूंगा मैं तभी ये कुछ छोड़ेगा, तभी मिल पाऊंगा। ये हो सकता है एक ऑप्शन, तो बस और कोई ऑप्शन है ही नहीं।
लाइट भी बुझाने लग गया तोड़ जल्दी तोड़ इसको The car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. वे ब्रो ये भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ये बंदा है तो Al, hurry up! I can hear those evil guys moving around. तो फिर तोता गार्डन लाइट उधर है बंदे यहाँ से तो उधर जाना है ये ऑप्शन तो कोई बनाया भी नहीं out of ammo.
बंदा है तो अबे वापस आ गया कथे। रास्ता बंदा इधर है। अबे घूम के नहीं आ रहा हूँ मैं बार बार, जो कोई रास्ता ही नहीं यहाँ पे है। उधर से मैं जाके आ चुका हूँ। उधर तो गा था मैं। जब रास्ता ही नहीं तो कहाँ से जाऊँ, कूद के जाऊँ क्या? ये गधा छोड़ेगा नहीं मेरे को। तो जब रास्ता ही नहीं इधर को जाने का भाई, प्रोसीड टू द गार्डन। इधर है कुछ भी नहीं है। अबे जब इसकी बहन की अखियाँ इसकी, अरे गेट आउट हियर भाई। रास्ता मिलेगा तभी तो आऊंगा मैं, रास्ता नहीं मिलता मेरे को। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इसके रास्ते ही है, बहुत और कंफ्यूज करते हैं। चल देखी जाएगी वो क्या कर सकते हैं। इधर क्या है? इधर से इधर का बंद ही होता है। इधर से जाना, इधर से गया मैं, ठीक है। इधर गया मैं, ठीक है। ये मिला मेरे को, ठीक है। ये मिल गया, ओके नाइस। यहाँ पे अब इधर आ गया मैं, इधर से इधर गया मैं। इधर आ गया मैं, ठीक है। यहाँ के लिए मैं सामने तो कुछ है नहीं, एक सामने और कहीं रास्ता है, और कोई रास्ता है, रास्ते नाम और कुछ भी, ठीक है। इधर रास्ता नहीं है, ठीक है। इधर गया, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। इधर गया, इधर आ गया। अच्छा ये सेम चीज़ है, दो जगह पे सेम चीज़ है ये। यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर आ रहा है, निकल गया भाई मैं। अरे वो वहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, वहाँ पे दो दिख रहे थे ना वो। We don't want any fighting. It makes people sad. फिर गार्डन आ गया। ये क्या गया? ये वो है
like a baby! अबे डबल चीजें आ गई अभी यहाँ पे, कुव्वे भी और ये भी, वाह खतरनाक होता जा रहा है ये गेम तो। गेम मिराद ये और ज्यादा खतरनाक हो गया ये गेम और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है ये। 24 गोलियां, 24 गोली में वो मरेगा नहीं। लेट गन के नाम तो कुछ है नहीं मेरे पास। समझ गया तो मैं, वहाँ पे कुछ है, यहाँ पे पड़ा है कुछ। तो वे भी मारेंगे यार, ये भी मारेगा, बच्चे भागने में फायदा है ना। Things to be that way we don't have any trouble, and I don't have to. बच्चे भागने में फायदा है। पहले इनको मारना पड़ेगा भाई, 3 बंदों को, ये जो भी है इन 3 बंदों को मारना पड़ेगा। वहां से मत आ जाना। इन 3 बंदों को मारना पड़ेगा पहले, तभी जाऊंगा तभी। आराम मामले पीछे आते हैं कुछ। एनीथिंग का अफेक्ट उठा भाई, इसको इसी तो जीतता है। इसलिए तो जीतते मेरे को। कुछ पड़ा है यहाँ पे, कुछ नहीं। ऊपर जाना है क्या अपने को? मुझे भी नहीं पता मुझे कहाँ जाना है।
तो कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा इधर? कुछ भी नहीं इधर तो। कुछ यहाँ पे अरे वो रहा वहाँ पे क्लियर करना वगैरह। तो जानवर चीज़ है यार, इसके बिना क्या क्या ही बनेगा मेरा, कुछ नहीं इसके बिना मेरा। Let's get out of here. Can you open this gate? Barry! Well, I slammed it shut. Barry! अबे सब कुछ उठ के आ गया। OMG. Hurry up, Barry! Can't be here! Just hang अबे क्या बीमारी है भाई? क्रेजी गेमिंग हेलो भाई, क्या हाल है? वेलकम ब्रदर। कौवे आ गए भाई, कितने मजा आ रहे हैं। OMG हो गया। Hurry up, Barry! निकलने भाई साहब, इतने बंदों से कैसे बच्चों? कुछ तो टैक्टिक अपनानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। फ्लेयर गन है, कुछ कर नहीं सकता मैं। Hurry up, Barry!
भूल गया था यार वो। Al, please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! अरे यार ये ना अब फिर जंगल से जाना पड़ेगा। बहुत बुरा बना हुआ बेचारे के साथ एलन वेक। भाई तेरी गलती नहीं है, क्या कर सकते। I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Now what? गन भी नहीं है। तो भैया क्या ही कर सकते हैं। Barry! Barry! कुछ नहीं कर सकते। Man, you're okay! Jesus, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. लेकिन जाऊँ कैसे? Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. नीचे ही है वो तो। It's चल like a फिर इधर sheer से जाना wall. पड़ेगा और क्या ना ही गन है ना ही कुछ है और लेकिन सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा। गेम है, खेलना तो पड़ेगा ही, सर्वाइव तो करना पड़ेगा ही कैसे ना कैसे करके। बाकी लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग है। Al, there's something moving down here. Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Yeah! Barry, are you alright? ये नीचे है। I'm good, Al. I'm great. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? नीचे बैरी, बैरी नीचे। ये घर में क्या दिखा इसको? Get to the farm. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. फार्म में जाना है लेकिन कैसे? यही तो मेन चीज़ है। कैसे लाइक कर दो तो भी देख रहा है मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। फार्म में जाना वो भी कैसे? ये नहीं पता कैसे। ना ही गन है ना ही लाइट है, कैसे काम चलेगा? नो गन नो लाइट। यहाँ पे है कुछ? अबे शर्म करो, कुछ भी नहीं है। कुछ तो शर्म करो भाई। कुछ तो शर्म करो बे।
वो चीज़ होनी चाहिए के पास। बंदे के पास ना ही तो लाइट है ना ही गन है, फिर भी इसके साथ बूम बूम कर रहे हैं ये। फिर भी सर्वाइव तो करना पड़ेगा। सर्वाइव कुछ भी नहीं है। nothing without survival। तो करना पड़ेगा बेटे, क्या कर आपको बिना दियो, बिना कुछ तो क्या ही करेगा ये। Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. लाइट कहाँ मिलेगी? लाइट कहाँ है? वेयर इज द लाइट? कुछ तो है ना, तो ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। जनरेटर है यहाँ पे। I hoped there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate. लाइक कर दो जो भी देख रहा है मेरी शेड्यूल। द लाइक एंड सब्सक्राइब बड़ी। I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. कुछ तो सारा मिलेगा इस लास्ट साइड के साथ। बाकी वहाँ पे गाड़ी, तो वहाँ तक तो जाना ही है, वहाँ तक जाना ही पड़ेगा भाई। गाड़ी में कुछ ना कुछ मिलेगा, ये चीज़ सब चीज़ है। और अभी बहुत ही अपन स्टार्ट होगी, पता था मेरे को कोई ना कोई आने वाला है, पता था। मरना पड़ेगा मुझे, ऐसा लग रहा है। मरना पड़ेगा, भगले मर गया। I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. I had no choice। पता मेरे को भाई क्या ये took trust no one in the dark। अच्छा, trust no one in the dark सही है। मैं ना ट्रस्ट कर रहा भाई, कोई नहीं है डार्क, ठीक है। अबे गन दे दो, एक नाम की गन भी दे दो भाई। इतनी ये गेम कैसा हो सकता है? अगर मैं जनरेटर चला लूँ तभी मैं बच सकता हूँ। जनरेटर चलने के बाद नहीं बच सकता मैं। बगले 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 माता जाना है। कितने सारे बंदे आ गए। भाग लेना है, भागने नाम की कोई चीज होती है भाई, भागने नाम की कोई चीज होती है। इतनी बैरहम दुनिया हो गई है भाई, अकेले बंदे के पीछे पड़े हुए, सिर्फ फ्लैश लाइट इस बंदे के पास। अरे यार सर्वाइव। A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. ये थक भी जल्दी जाता है उल्लू का पठा। वापस तो मिलेगा यहाँ पे कुछ भी।
कुछ भी अबे 0% बैटरी के साथ बैटरी मिली है भाई, बैटरी मिली है। अबे बैटरी का करूँ क्या फिर, जब बैटरी मिली है तो बैटरी का कुछ नहीं कर सकता। गन देनी थी कृष्ण ने भाई, बिना गन के मैं क्या करूँगा। गन इज द बेस्ट वे। The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. साला फुल तो गया, शुक्र है भाई, शुक्र है। I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. अबे गन दे तू, गन दे भाई जो भी। I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. ये चीज मिला ना कुछ हिसाब सर का सोचता। अबे ये वो है, यहाँ पे वो है, क्या बोलते इसको, ट्रैप है ये। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना चाहिए तो, लाइक एंड सब्सक्राइब। ट्रैप है यहाँ पे, बहुत सारे ट्रैप है, इतने सारे ट्रैप। वाह, बहुत सारे ट्रैप है, तो पता वो ट्रैप से भी बच के जाना भाई। अबे वहाँ लाइट है, वहाँ पे लाइट है, उस पे जनरेटर है। जनरेटर ना पहले ना एक बारी में स्टार्ट होता है, अब की बार बहुत तो टेकन आरता विद डार्क। क्या चीज़ दे रहा है ये भी नहीं पता क्या। शॉर्ट गन की गोलियाँ दी हैं, लेकिन शॉर्ट गन कहाँ पे है? शॉर्ट गन है, शॉर्ट गन की गोलियाँ बोल दी हैं बस। अबे क्या है यहाँ पे? Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. अभी जाना किधर है? उधर से आया ना मैं। हाँ इधर ही जाना होगा, इधर ही जाना है। यहाँ पे ट्रैप बहुत सारे, ट्रैप है। अबे दो ही गोलियां डली थी। अबे इतने में तेल दे तो एक डंका मारना टिका के बस, फालतू कुछ नहीं करना। उधर जाना ना, जाना तो उधर ही है। अबे आ जा उल्लू के पट्टे, आ जा। अच्छा नकली है, घंटा वाली भी चला घर है यहाँ पे तो। Hello? Anybody here? Barry? No! Danny, you're not! I could see the car, but there was no sight of the driver. No! Don't! I'm sorry! अबे जाने के लिए तो उधर भी तो जाना पड़ेगा ना। ड्राइवर तो दीजिए, अभी तो खुला था यार ये इन्वेस्टिगेट का कैबिन। लेकिन खुलेगा कैसे ये? नहीं खुल रहा भाई।
वो तो समझ गया मैं। इन्वेस्टिगेट द कैबिन, कैबिन खुलेगा तभी तो जा सकता हूँ अंदर। अबे किक मार दे, किक भी नहीं मार रहा है यार। अबे अंदर जा ही नहीं रहा भाई ये। एक मिनट, रीस्टार्ट चेक पॉइंट। ये अपने आप लोग लग गया था पहले। Hello? Anybody here? Barry? The front door was locked. आवाज तो बाहर से ही आ रही है। आवाज तो बाहर से ही आ रही है। I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? That he's I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. अबे कर तो लिया इन्वेस्टिगेट और कितनी बार करूं? Dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way. Near escapes. Cliffhangers. In a horror story, we can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. अबे ये खत्म नहीं हुआ इन्वेस्टिगेट द कैबिन। और कितनी बार देखूं? देख तो लिया ये सब मैंने। फोन है यहाँ पे।
guess. Danny, huh? Get in the farm. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. यहाँ पे मिलेगा कुछ ना कुछ या फिर ही कुछ है कुछ ना कुछ तो होगा ही यहाँ पे ये रहा यहाँ पे फ्लेयर गन और ये जैकपॉट था नाइस नाइस ऊपर क्या है अच्छा इधर आने का रास्ता था ठीक है ओके If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I'd made it this far myself. But Barry was Barry. फार्म इधर ही तो है Gotta be kidding. इधर कुछ मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इधर ये करा रहा है ये करा रहा है ये करा रहा है ये सही बंद कर दिया इन्होंने तो now what for what है now what रास्ता है इधर जाने का रास्ता तो उधर ही है ना अगली जाना पड़ेगा मेरी जाना पड़ेगा
इधर से जाने का क्या मिलेगा कुछ देखो ना चक्कर फिर कि खुलने वाला था या नहीं ये सोता रास्ता नहीं है भाई I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Ow! Run! Incoming! There's too many of them! God damn! I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Bronson. Shut up and shoot! Fantastic. Ow! We have to... Damn turn of the century wire! They are trying to kill us. That's the high point of my life? Really? Children of the Elder Dawn! Back in the game, yes! Can I do this? At word 789, what does Alan call his new smoothie store? क्या कर रहा है भाई? Rewiring! Working again, I promise! अबे कल जा रहा हूँ मैं.
अबे यार ये काम करता हूँ मैं पहले सारी चीजें उठा लेता हूँ ठीक है Please don't let me die here. Although if I buy it, this is pretty much how I always wanted to go out. Oh! Our entire lives. They are trying to kill us. That's the high point of my life? Really? Children of the Elder God! God damn it! अरे यार इसकी मैया का भरोसा No, no, no! Why do you keep doing this to me? Please, please, please. Don't let me die here. Although if I buy it, this is pretty much how I always wanted to go out. Of our entire lives. They are trying to kill us. That's the high point of my life? Really? God damn it! Back in the game! Finally, I done it. That was awesome! Bright Falls, rock and roll capital of America. तू ही awesome था भाई इसके उसका ना था कुछ भी Hey, Al! This way to the farm! See, bestseller? No reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got, before they ambushed me.
all this stuff? They must have done okay for themselves. So how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Your first real writing job. Yeah, you started. Oh, is this one of your episodes? Find a way through the burn. Oh wow, who's that? You don't know him? The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Honestly, isn't this my dream? Real pal, you're just another dream. I'm a dream. You're a dream. Whoa! Good going, Al! Dream. What am I? All I know is I'm one of the smart guys, and they say that's the guy doing the dream. I think we can make it through here, Al! Ah! Ah! उसके घर में जाना है, कहाँ से जाना है? अबे यार क्या एक चीज तो सूझ नहीं रही, दूसरी चीज सर पे आ जाती है। उसके घर में जाना है तो कहाँ से जाना है? इधर से जाना है मे बी नहीं, इधर से तो नहीं जाना, जाना तो बाहर से ही कहीं पे है। लाइक कर दो जो भी देख रहा है, मेरी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। गोलियां 25 गोलियां 25।
सीधा थोड़ा बिठा देते हैं माथे पे। ना मेरे पास क्रैकर है ना मेरे पास वो है, तो करूँ यार। एक मिनट पैर करूँ तो करूँ क्या भाई। Wake and Perry making their way through the Anderson farm outbuildings in order to reach the farmhouse and the secret message that await them. लाइक कर दो जो भी देख रहा है इसी बात पे। मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। अब नहीं आया गया, अब की बार नहीं आया गया वो हवाई जहाज। नहीं यार आपकी बार नहीं आया शायद। मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है सिर्फ 13 है गोलियाँ बस, और नथिंग। ले भाई उस गाड़ी पे मारूं कि वो गाड़ी उड़ के आएगी ना, वो गाड़ी उड़ के आएगी थोड़ी। वो गाड़ी ना उड़ के आएगी, समझ गया। यहाँ पे कुछ तो होगा यार, ये ऐसे तो हो नहीं सकता। कुछ तो होगा भाई गोलियों के नाम का। अंदर देख क्या गोलियों के नाम में कुछ भी मिल गया। मेरे हिसाब से मैंने ले लिया था पहले ही, नहीं है गोलियों के नाम का यहाँ पे। हो रहा है कुछ भी एनीथिंग एल्स। अरे हाँ ये रहा यार। क्या यार तू ध्यान से देखता नहीं है दीदी, कभी भी ध्यान से नहीं देखता था, पता नहीं क्या चक्कर है तेरे को। यहाँ पे भी नहीं कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं फिलहाल तो ठीक है। तो मेरे पास है एक ये और 36 गोलियाँ, ठीक है। ठीक है भाई, कोशिश रहेगी अब की बार हो जाए काम। कुआड़िया मारा मेरे यार। कुआड़िया मारा है तो मेरे बटे।
एक मिनट का फ्लेयर गन की गोली ये नहीं है, इसकी गोली चाहिए यार, फ्लेयर गन की वाली। ऊपर देख क्या कुछ मिलेगा तो। बैटरी यहाँ पे, लेकिन बैटरी का तो मेरा कुछ काम ही नहीं है। एक मिनट ऊपर देख के आता हूँ, कुछ मिलेगा तो। सीढ़ियाँ तो इधर ही थी ना, सीढ़ियाँ तो इधर ही थी, कहाँ पे गई सीढ़ियाँ? हेलो, सीढ़ियाँ कहाँ गई बे? सीढ़ियाँ टूट गई, टूट गई भाई सीढ़ियाँ तो। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे कुछ पड़ा हो। अबे साले अब भी भगा के मार रहा है। शर्म कर ले कुछ। आउट ऑफ एमो है, आउट ऑफ एमो है, आउट ऑफ एमो है। एमो ढूंढ कर ले। The show going? Release a new single? Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Be careful, Al! Good. Keep your eyes open, okay?
As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy. Which concerns an ongoing investigation. The elevator was dead. I'd have to get some power to it first. Saying we got, other items to try. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. To be kidding me. Are you kidding me? Bro, are you kidding me? अबे फ्लेयर गन की गोली मिलेगी तभी तो बच पाऊंगा। यहाँ से सीने का रास्ता है नहीं। अबे जब उसको किक मार सकता है तो इसको भी किक मार सकता है ना। वो लोग पठे ठीक है वो ना मेरी रैली कड़वानी। बाकी कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ओपन द विलो डोर फॉर बैरी। ठीक है जाने का रास्ता। जाने का रास्ता देख लेता हूँ इवेंट में। मुझे नहीं पता यार।
मुश्किल से हराया मैंने इसको, बड़ी मुश्किल से। ये खुलेगा, ये नहीं खुलेगा, वापस जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। मे बी मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये तो खुल नहीं रहा। यहाँ पे दिख रहा है कुछ, है तो कुछ यहाँ पे है, कुछ तो है इधर। इसमें से इधर कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को। Anything else? Nothing. We took lamp. अरे ये रहा यहाँ पे, we took lamp. इसका नहीं है क्या वो, और किसका है वो? इसका नहीं तो किसका था वो? अबे कौन सी उसका वो? ओपन द सीलो डोर फॉर बैरी। इसका तो है नहीं वो। इधर इधर से गिरा था मैं, अब जा तो नहीं सकता वापस यहाँ पे। यार ये रहा यहाँ पे बैरी के लिए डोर। ये रहा। Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hang on. Hey, let's go, man. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. Ah! Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Come on, one more gate. Let's do this thing. अबे ये ले लेना, इसके लिए साथ इसके साथ नहीं काट देगा। कट कर देंगे, कट। Lights are out. I guess we better check the fuse box. Find the fuse box. मेरे हिसाब से नीचे तो नहीं मिलेगा फ्यूज बॉक्स वगैरह। बहुत रेयर चांस है नीचे भी मिलने के। बहुत रेयर भाई। यहाँ नहीं मिलेगा फ्यूज वगैरह मेरे हिसाब से, ऊपर ही मिलेगा जो भी मिलेगा। The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. अरे फ्यूज बॉक्स ही तो ढूंढ रहा, और क्या ढूंढ रहा तू? फायर का फ्यूज बॉक्स आते साइड में हो जाने। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ओल्ड गोड्स नो द ट्रुथ। यहाँ पे कोई फ्यूज नाम की चीज दिख नहीं रही मेरे को। ये टोपी का मैनुस्क्रिप्ट, ये खुलेगा? बंद है ये भी। यही मिलेगा ना फ्यूज? चीज खुलेगा तो वहीं पे मिलनी चाहिए ना फ्यूज। ये रहा यहाँ पे। ये तो फिक्स अबे गाने नहीं बजने चाहिए, गाने कॉपीराइट आ जाता है बहुत। Can you hear that, Al? Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Secret report.
नीचे वो तो मेरे हिसाब से तो जो भी रिकॉर्ड की कोड है वो बोलेगा ये अबे गाने नहीं बजने गाने मत बजाओ गाने मत Cynthia बजाओ Weaver. Right. Must be. गाने का मत बजाओ बे कॉपीराइट आ गया ना कुछ नहीं फाइंड द belief now what कहाँ पे है वो क्या फिक्स का रिकॉर्ड अबे रिकॉर्ड कर ये होगा शायद ये टू प्ले रिकॉर्ड इसको स्किप कर देता हूँ मैं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए वही सॉन्ग वगैरह checkpoint. अच्छा कैसे दिखा भागा था यार It was a crazy, drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the footsteps of my past self to find out what had happened that night. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. अच्छा ये कह रही है कि अंदर हो सकती है गो बैक टू द गार्डन The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. You laugh at the whole thing together and put it behind you. She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. क्या बताना चाहती तू ही तो मिली थी इसको तेरी तेरी वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ था You can write her back. The story will come true and all will be well again. अबे तेरी तो स्टोरी है अपने आप She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. तेरी स्टोरी तो है जैसे लिखेगा वैसे ही तो चलेगी Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. जो अपनी स्टोरी
story बता No. रहा. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish. To interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. We'll know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. The truth now ending? Maybe sad. I'd woken up, confused and groggy. My mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. पर इसकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी यहाँ पे. ठीक है, इसके बाद खेलना शुरू किया था. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. अच्छा, ये पुलिस वाला क्यों पड़ा भाई? इसके पीछे क्या फॉल्ट किया था इसने? मतलब क्या किया था इसने ऐसा? Alan Wake. Previously on Alan Wake, under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that has come. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Walkery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, but let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, all right? इसके साथ एक्सपेरियर फंसा हुआ है. सही है भाई, दोस्त है इसका, पूरा साथ दे रहा है. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. My job to keep it safe. Safe in the light. लास्ट टाइम आया था ना यहाँ पे, तब मिला था इसको कोई ना कोई यहाँ पे, मतलब जेल में ही. वो तब भी ऐसी बातें. All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. ठीक है, चेक पॉइंट रीच हो चुका है, तो हम इस वाला पार्ट के लिए कल. ठीक, वैसे एक बार मैं कंटिन्यू करके देखूंगा इसको, क्योंकि कई बार होता है कि बैक से वो नहीं होता. बाकी चेक पॉइंट रीच हुआ था यहाँ पे मे भी. All the manuscript pages were gone. सही है, डन, ऑल डन, डबल डन. कंटिन्यू गेम, न्यू गेम एपिसोड. ठीक है, आज का कार्यक्रम 31 समाप्त. मेरे हिसाब से कि 2 एपिसोड बचे हैं, तो परसों तक हो जाएगा खत्म. ठीक है, मिलते हैं कल. टाटा, बाय बाय, गुड नाइट. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the
habit that my mind is breathing